Good evening, everyone. Assalamu alaikum. This is me, Hifza Pervez, and we are back with yet another episode of Seekh. The topic today is actually very interesting. हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे दिन महीनों में बदल रहे हैं, महीने सालों में बदल रहे हैं, but in the middle of all that life, we are unaware of the goal that we have to have. We are unaware कि हमारी जिंदगी किस पाथ की तरफ जा रही है, and we are actually unaware कि हमारे interests किस किस्म के हैं. Is it only sleeping, eating, working, and repeating the cycle? There shouldn't be, and there is, and definitely should be more to life than that. So we wanted to discuss this specific idea that is there any specific art that we can master to live our life to its complete fullest? We wanted to discuss this topic, and we wanted to have a guest जो कि towards that path already struggle कर रहे हों. We have a very special guest with us today, Maryam here with us. Maryam has a very diverse background. She obviously would not have gotten everything she thought she should be, but she is definitely on that track. बहुत अच्छा सा background है. At such a young age, she has achieved a lot, and I am sure that she is going to achieve a lot more. मरियम एक से ज़्यादा प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं. शी इज़ रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस. शी इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट देयर इज़ वन थिंग जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है मरियम के बारे में, एंड दैट इज़ हर कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क. I won't be delaying so much time, and I'll be welcoming Maryam towards the episode. Assalamu alaikum, Maryam. How are you? Wa alaikum assalam. Thank you so much for having me here. It's actually our pleasure. अच्छा मरियम, जब हम टॉपिक एक ऐसे, हमारा करंट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सी है, लेकिन द टॉपिक इज सो डाइवर्स दैट आई डोंट थिंक इट वुड बी possible for us to cover this in such short time, but I'll try to start and then I'll try to reach somewhere. राइट. अच्छा, सबसे पहले ना मेरा क्वेश्चन आजकल की जनरेशन के बारे में होगा कि वी आर अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द प्रीवियस जनरेशन. व्हाट डू यू थिंक इज द लाइफ पर्सपेक्टिव इस जनरेशन का? आई इंक्लूड माई सेल्फ एंड यूर सेल्फ इन दिस एज वेल. वी वॉन्ट टू डू एवरीथिंग. वी डू नॉट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग. हमने वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है, हमने फैमिली लाइफ बैलेंस करनी है, हमने अपनी सोशल लाइफ बैलेंस करनी है, और उसके बाद वी वॉन्ट टू हैव सम मी टाइम एज वेल. तो ये आइडिया थोड़ा जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ भी आ गया है, कुछ रोल्स न्यूट्रल हो गए हैं. व्हाट डू यू थिंक आजकल की जनरेशन का जो करंट लाइफ पर्सपेक्टिव है वो कैसा है? पर्सनली आई बिलीव कि वी कांट जनरलाइज नाउ, क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो प्रीवियस जनरेशन थी they had that specific set of rules they had to follow, और उनकी बड़ी generic सी एक life होती थी. Now as we have a flood of information and access to everything, and as you said, we want to do everything and don't want to miss out on anything. तो हम इसको अब generalize नहीं कर सकते. The best part of this generation is that they have their own point of views about each and everything. So it's diverse and it's wonderful, I would say. लोगों ने अपनी इंडिविजुअलिटी को जानना शुरू कर दिया. पहले ऐसा नहीं था. पहले you had to be a part of some crew or you know कबीला or something. I'm not against that. Again, I'm not against that. But पहले ये सिस्टम से अब मुझे लगता है कि इंसान को ये भी पता चल गया है कि वो खुद भी कुछ हो सकता है. डेफिनेटली. तो विच इज़ वेरी, आई थिंक, एम्पावरिंग एंड ब्यूटिफुल. बिल्कुल सही कह रही है मरियम. इट्स रियली अमेजिंग कि हमने अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं कर दिया हुआ. वी हैव वी थिंक आउटसाइड द बॉक्स. दिस जनरेशन थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स. बट द पॉइंट इज कि दिन में फिर भी 24 घंटे होते हैं. तो आई वुड एक्चुअली लाइक यू टू टेल अस कि सो मच इन्वॉल्वमेंट, यू नो, इन different sectors, वो आपस में interconnected नहीं है. How do you manage all of that in one day, or how do you manage to contribute in all of these sectors, or how do you manage that? That's really a question. I think it's really not that easy. But of course, with the cooperation of very cooperative people around, we can actually do a lot of things that we want to do. हम लोग इसमें I would say कि of course I'm privileged enough, alhamdulillah, to have such an amazing family who has cooperated with me to fulfill my all of these activities. बाकी it is very consuming. जब हम सब कुछ करना चाह रहे होते हैं, we always have to
choose and select. You know, हम देख लेते हैं पहले जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो सोशल वर्क हमारा 90% होता था. फिर जब हम ग्रेजुएट हो गए, फील्ड में आगे काम करने लग गए, वी हैड अ बिजनेस, उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वी हैड टू डू जॉब्स. ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई डोंट नो, बिकॉज you know, for the fact that one belong to a middle class family, they have different challenges, और दूसरों के different होते होंगे. I'm not saying anyone is challenge free. तो हम लोगों को मल्टीटास्किंग करनी आनी चाहिए. We're human beings. I don't say become an octopus or something, but Allah has given us this capacity, and there is this very beautiful ayat I read once कि Allah doesn't burden a soul more than they can handle or tolerate. तो Allah ताला आपको उतनी ही चीजें देते हैं जितनी you can do, और multitasking is not a bad thing, which I think used to be considered something के बंदा बहुत unfocused है ये, but in today's world, I think that's a plus point if you can handle multiple things in a thing. So I think that answers your question. That's how I just do. There is no rocket science behind it. I just believe in what I do, and I believe more in Allah. Because I believe in Allah. That's my personal beautiful thing. Yeah. Acha Maryam, you just talked about your family cooperation, but I think even if you're living in 2021, there is still a huge generational gap between us, and I think that would be applicable on everyone, whether it's the middle class society or lower middle class or anyone. We at one point or the other, we are facing that generational gap. How do you face the family pressure or any restriction or anything related to that? You know, I have started putting on some makeup now, okay, so I don't look that drained and a zombie. I have started using the Snapchat and Instagram filters so that I really don't look that drained. It's really challenging, especially for, I think, being a girl from the middle class. This sometimes suffocates me a lot, and the family pressures, they are so real. Although my parents, मुझे ना बचपन से ये mid child, mid kid has this super power कि वो बहुत इग्नोर होता है, और फिर उसको वो टाइम मिलता है to observe the whole thing and then to know where to put their cards. तो हम इसीलिए थोड़े street smart हो जाते हैं, जो mid kids होते हैं mostly. तो I think that gave me the edge कि मैंने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर लिया, हाउ मैंने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर लिया हाउ दे आर ट्रीटिंग माय एल्डर सिबलिंग्स, कि किस तरह की चीजें हैं, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे डू, और मुझे क्या करना है. मुझे वो टाइम मिल गया, बेसिकली बचपन में भी टाइम मिल गया था मुझे. तो मैं बिलीव करती हूँ कम्युनिकेशन पे, और फिर अगेन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह ताला. आई थिंक के 10 दफा दुरूद पढ़ना होता है, अल्लाह ताला सब कुछ आपका सॉल्व कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं हमेशा पेरेंट्स से कम्युनिकेट करती थी. The first ever challenge, if I go back to the lane, was of selecting the field of education. Right. Because हमारे यहाँ पे बहुत लिबरल हमारी फैमिली अपने आप को समझती है लेकिन they were like कि मेडिकल में जाओ, वो वाला जो ये loopholes हर जगह एग्जिस्ट करते हैं. तो वो जो BBA वाला डिसीजन था, that was the almost if I can go, that was the first challenge back in time. तो उसके लिए मैं लड़ाई नहीं करती, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है लड़ने की, तो आई कम्युनिकेट, मैं अपना मुद्दा बयान करती हूँ. एंड आई डोंट नो हाउ अल्लाह ताला मेक इट पॉसिबल फॉर मी कि आप अपने, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, आपको बात करनी आनी चाहिए. हर कोई सुनता है, लेकिन वो बात आपकी तब सुनेगा जब उसमें कोई दम होगा. बिल्कुल. और जब आपका खुद का बिलीव होगा, जब आप खुद लड़खड़ाए हुए हो अपने अगले को क्या वो करना है. और इसके लिए इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आवर ओन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर वो he believed in that religion which he had to preach, अगर वो ही कमजोर पड़ जाते या उनका इस तरह वो किसी को वो कर ना सकते ना कन्विंस. तो this is how I take life, कि मुझे कुछ भी मनवाना है या मुझे कुछ भी करना है तो आई कम्युनिकेट. और अगर मामा नहीं मानेंगी तो पापा ऑफ कोर्स, मैं मतलब इन दोनों में वो देख लेते ना बंदा के यू हैव टू सी किस पॉइंट को किसके पिक किधर करना है. This is advice for the public. Try taking some time out to understand the other person you're going to communicate. You would know how to do it. It's really not a rocket science. बहुत खूबसूरत. अच्छा, personally I am the elder one, तो but I think the middle
all of the middle children should pick up that point कि थोड़ा सा elder siblings का pattern follow करें और देखें कि आपने जो अपना कार्ड फेंकना है वो कहाँ फेंकना है. And second is communicate well. Communication transparent होनी चाहिए, communication honest होनी चाहिए. तो think there would be a point that you would be able to handle the family pressure. Right, Maryam. अच्छा, आप you're running a very successful business and I'll say कि जब हम किसी भी चीज़ का स्टार्टअप लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं. आजकल एक कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है, द इंक्यूबेशन सेंटर्स कल्चर. बहुत से लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा, तो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल एज यू हैव बीन द पार्ट ऑफ इट. के प्लीज डू टेल व्हाट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द पॉजिटिव, एंड इफ देयर इज एनी नेगेटिव. Can I be brutally honest? Yes, you can be brutally honest. Absolutely. It's like every other thing जो दुनिया में हो रही होती है, पाकिस्तान में 10 साल के बाद वो कल्चर आ रहा होता है somehow specifically related to development. I was very happy to know that पाकिस्तान में भी ये startup culture आ रहा है और people are understanding the fact that young people can come into the business and can handle. और बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि people mean government or the authorities are trying to create an ecosystem which can support people. सुन के बहुत अच्छा लगता है. लेकिन पाकिस्तान unfortunately I would say कि पाकिस्तान की हर दूसरी चीज की तरह this culture is also very खोखला. But the good thing, but the positive thing is कि at least it has begun. जहाँ सिर्फ शो हो रहे हैं वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे हैं. There are like अगर हमारे I started back in 2015 when I graduated. तो वहाँ से जो मैंने जर्नी देखा, I tried to be, क्योंकि हमें बहुत फोमो हो रहा होता है कि we don't miss anything out. जितना मैंने देखा रोले शोले हमारे मच जाते हैं, लेकिन जो रियल टाइम इम्पैक्ट होता है वो बहुत कम होता है. हमारे फाइनेंसेस के इश्यूज हैं, हमारी एजुकेशन के अपने कितने इश्यूज हैं. हम इफ वी स्टार्ट हाईलाइटिंग इश्यूज तो हमारी इश्यूज की लिस्ट खत्म नहीं होगी. तो आई थिंक कि हम इसी पे इत्तेफा कर लें कि हम अप्रिशिएट कर लेते हैं अपने मुल्क को इस बात पे कि यहाँ पे ये चीज आ तो गई है. एंड आई होप विद द पैसेज ऑफ सम टाइम लाइक more 10 years maybe we be able to develop a strong system inshallah, और हमारा शायद खोखला ना हो. So if anybody is starting a business, अब इतना मुश्किल नहीं है. You have access to almost everything and it's क्या जरूरी है कि हम हर चीज का क्रेडिट अपने मुल्क को दें, क्योंकि इंटरनेट है और इंटरनेट के होते हुए हमें एक्सेस है बहुत सारी चीजों की. तो आई थिंक it's I'll appreciate that it has came to our country. Right. But I'd say कि at least it has started. The point is that again कि हम appreciate करते हैं. And I think इसमें बहुत ज़्यादा important factor ये आता है कि हमारी young generation जिसके पास बड़े fresh new ideas आते हैं, they should try to start implementing via using any platform. कुछ भी आपको मिले, start implementing that idea. तो वो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएगा. तो जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो देयर इज़ वन वेरी स्पेसिफिक एरिया जो कि आपको आई से कि यू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. अब वो चैलेंजेस कभी ना कभी फाइनेंशियल चैलेंज होता है, कभी ना कभी वो किसी टेक्निकल चैलेंज की फॉर्म में आता है, कभी ना कभी वो एक इंसान की फॉर्म में आता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आके दे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन. एंड आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सम ऑफ दोज चैलेंजेस. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप उस होपलेस सिचुएशन को या किसी ऐसी सिचुएशन को जो थोड़ी डार्क साइड पे चली जाती है, हाउ डू यू ट्राई टू टैकल ऑल ऑफ दैट? The journey of business or startup, I don't know about other countries, but in here it's really challenging. And it's like more hurtful than a breakup, I would say. Right. It's a very good metaphor. if people can relate to it. क्योंकि इसमें जब when you start you have minimum resources. हमारी funding के systems जो हैं वो accessible to few and not available for all वाला सिस्टम होता है. और यहाँ पे हमारा वो वाला कल्चर बहुत ज्यादा है कि जिसके हाथ लग जाएगी चीज उसने ले ली और बाकी ऐसे ही जस्ट सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. आई बिलीव, आई थिंक तो इस सब में
you get through a lot of dark times. आपको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, क्योंकि सबसे पहले तो फैमिली ही सपोर्ट नहीं करेगी भाई, तुम नौकरी करो, फौज में जाओ या किसी कॉर्पोरेट में जाओ और वो जॉब करो। लेकिन हमें हम एक जात है हमारे, हम लोगों के, जिनको होता है नहीं हमें अपना कुछ करना है, वी हैव दिस कैपेसिटी, तो वो ऑलरेडी तो डाउन कर रहे होते हैं। फिर जब यू गेट इनटू द फील्ड, वहां पे और ज्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं, लाइक फंडिंग के, फाइनेंसिस के, और आपको कहीं से पैसे मिल ही जाए तो सोने पे सुहागा ही होता है कि आपको मैनेज नहीं करने आते एट टाइम्स। फिर जो आपकी टीम बिल्डिंग है उसमें 10,000 किस्म के चैलेंजेस हैं। हमें लगता है कि हम 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, लेकिन जो हम स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप इज लाइक 24/7। बिल्कुल। This consumes you a lot and all of your resources, and you are most of the time left alone. और उस सबको फेस करना पड़ता है, because you can't kill yourself or die. That would be a loser thought. So the thing that helped me, I don't know about others, is again belief. और मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये जब जो हम पढ़ते हैं ना कारोबार में बरकत ज्यादा है या वो, because it's such a risky thing. You feel like you are going through Fullest all the time, and you have to have that strong belief, or there is no other way to go through it. So belief, I would say, belief helps, and some good friends can be there, support to listen to you at least. So I think sometimes this just the emotional support is everything you can have at that specific moment. क्योंकि again Allah Ta'ala won't burden you more than you can tolerate. तो there are all, जहाँ problem है ना, solution already exist करता है. You just have to calm down in that situation. Make sure कि जिंदगी में एक अपने ऊपर एहसान कर ले, कि अपने आप को सराउंड अच्छे लोगों से कर ले, अच्छे इंसानों से कर ले, जो वल्चर्स ना हो और बस आपको नुकसान ना पहुंचाते हो, जो सुन सके आपकी बात। और ऐसे किसी टाइम में सपोज इफ यू डोंट हैव एनीवन अराउंड, क्योंकि ऐसा होता है, तो जस्ट सिट डाउन somewhere, stop everything. You don't have to burden your soul, yourself, your body. Just sit, calm, do nothing. जब आप रिलैक्स होंगे, सांस लेंगे और आप फोकस करना शुरू कर दे on the blessings you have, सब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा. It really works. It worked for me. अच्छा मरियम, whatever you have said in all of this, I wanted to ask a question, लेकिन I think you already have answered कि at this age if you are starting anything from scratch, तो आपके you face multiple things. आपका experience minimum होता है, आपके finances बिल्कुल zero होते हैं एक तरह से, you do not have people support, everything is on the minimum. But I think in all of that, a few things that you have mentioned, that have faith. खुद पे भी belief रखें और अल्लाह पे भी belief रखें, और उसके साथ साथ this very small aspect that you should try to surround yourself with the people जो कि आपको सिर्फ they will try to bring you up instead of bringing you down. छोटी सी भी achievement होती है, if अगर आपके इर्द गिर्द वाले लोग उसको अप्रिशिएट इस तरह करते हैं, तो आई थिंक यू हैव द आइडिया कि आपका मोटिवेशनल लेवल कितना ज़्यादा बूस्ट अप कर जाता है, एंड आई थिंक दैट्स इनफ टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. I would like to add something over here. बिल्कुल. हम faith की बात करते हैं, अक्सर लोग जब hopelessness वाले उसमें darkness में होते हैं ना, तो actually वो पूरी faith ही lose हुआ होता है. बिल्कुल. तो for them specifically, and for those who are not Muslim or something, so law of attraction is something that you must learn or read about. You will get whatever you're seeking for. Yes. You just have to believe in what you want to believe. Like आपको लग रहा है ना ये स्टार्टअप करने लगे, it actually happens, या ये बिजनेस आपने करना और ये चलेगा, आपको उसमें बिलीव करना है, and you will see कि आपको सारे रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे. With zero budget you will be able to start a lot of things. So when we are talking about faith and belief, it's more in you and the powers you have been blessed. Just believe. So ये law of attraction is also something you. वेरी राइट. अच्छा, स्टार्टअप्स की हमने बात की, चैलेंजेस की बात की. देयर इज़ वन मोर थिंग जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहती. आई थिंक इस पे पूरा टोटल डिफरेंट शो होना चाहिए, बट देयर इज़ वन मोर थिंग कि जो आपकी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है. मरियम इज़ अ कंसिस्टेंट एंड परमानेंट पार्ट ऑफ सोशल वर्क. यू नेम द टास्क. आपने किसी स्टूडेंट की एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेक ओवर लेना है, आपने ब्लड डोनेशन का पूरा अरेंज करना है. यू नेम द टास्क एंड शी विल बी हियर विदाउट नोइंग हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू रीच
to that finish line. I think जब social work की बात आती है तो everyone would be very certain कि जब social work की बात आती है तो there is nothing monetary benefits associated with it. आप कुछ भी financially उसको earn नहीं कर रहे होते हैं, but obviously there would be something जो कि आपको लगता है कि आपका reward है या you are earning. I would like you to tell me कि आप या tell everyone who's watching कि what do you think you're earning out of it? That's something really priceless that we earn out of it. बचपन से पापा हमें जब स्कूल छोड़ने जाते थे तो पापा ना हदीसें हमें सुनाते थे. It was his practice. तो उसमें एक थी कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर होता है. और and I used to always like desperately pray Allah Taala मुझे हमेशा देने वाला रखना. So there were times when I was not able to help people from my own pocket, and then I got to know about the NGOs और ये सब. और मैं सोशल थी तो I saw कि जो मैं I can bridge the gap. तो I think ये वाली चीज जो हम करते हैं it's solely for our own being. I think it's purely connected to your soul. Yeah. Nothing materialistic, nothing to this world. Yeah, we are doing it for ourselves, हमारी purity and everything. We are selfish enough कि हम कुछ तो अपने लिए करें तो this is something totally for us, for me. तो वो उसका reward is priceless. Right. बहुत खूबसूरत. Time थोड़ा short होता है. It was not enough, but it was very good. I would like to involve some concluding remarks. I don't think it's completely possible to master the art of living the life to the fullest क्योंकि एक इंसान एक ऐसी चीज़ है once you achieve something you always going to have some next goal. आप कभी भी full stop नहीं लगा सकते, but what we can do is to start trying. I think we should start exploring ourselves first. हमें ये पता होना चाहिए हमारे interest क्या हैं, हमारे goals क्या हैं. Life is only given to us once. We should make the best out of it. We should make the better versions of ourselves every passing day. Be kind to each other, support each other, spread love, joy, positivity. Take every day as the mini life and you will see how amazing that can be. It was a very interesting topic and I'm actually looking forward to more beautiful and interesting ideas and to meet more amazing and interesting people ताकि वो हमारा जर्नी हमारे साथ शेयर करें और हम सब मिलके उनके साथ कुछ सीख सकें. We'll come with another next episode and I hope it would be a good one as well.